of TGIF, Ranveer. Tell us about your journey. No, it's been a whirlwind journey. मतलब पता नहीं चला और तीसरे सीजन पे आ गए हम लोग. It's been a whirlwind journey. For me, it's been a journey of rediscovering India through its fried food. I mean, there's so much of fried food that we love in our country, you know. And the ability to recreate that fried food into 84 recipes. Can you imagine? 84 recipes in 3 years, and it's been great. You know, looking forward to the third season. Like I said, third season has another level to it. You know, so my first level of difficulty was cook in the air fryer. My second level of difficulty was help Akshata, photographer, cook in the air fryer. Now this is the third level of difficulty, which is do treasure hunting and cook in the air fryer. So this is fun. All right, 14 cities and 84 recipes you mentioned. Oh my God, I'm a little jealous of you and your team right now. Please, यार इस साल मुझे भी ले चलो आपके साथ. बिल्कुल. Actually, most of this would not have been possible without my army of celebrity sous chefs. So सारे treasure hunting के clues and help came from them, and I actually have my sous chef for the day. All right, we're waiting for your. To be honest, I'm super thrilled. I think we're all a huge fan of Chef Raj. Absolutely. Absolutely, right? And I'm so happy to be a part of Zoom's, third year journey for this super exciting show. Philips air fryers, thank God, it's Friday. Season 3. Well, I'm sure you all are curious to know what's happening in season 3. Like he said, 14 cities, 84 recipes. What else is left to be made in the air fryer, So to give you a glimpse of that, what's the team been up to, let's have a look at something special. Food. What else can we look forward to this season? So besides the tasty food, I think we're discovering cities. हर शहर का एक character है, एक व्यक्तित्व है, एक culture है. Every city has a language, and so we're discovering those cities, their language, their character, their culture, along with their food through a medium of treasure hunting. Now, treasure normally is a pot of gold at the end of the rainbow. Here, the pot of gold is food and food memories. So that brings the whole show together into a bigger and a better space, which is, it's not just food, it's treasures. Treasures. Okay, Prachi, what's your take on that? Food and treasure hunt, how does that go together? I think people are going to be in for a super surprise, because who imagines treasure and food together, right? I always thought it's more about gemstones and stuff like that, and I love treasure hunts, and I love food. I'm a foodie. So I really want to see how this goes in together. Well, Chef, you will be going to all the cities and you will be traveling. What about us? Yeah. How are we going to feel that? We can do that now. All right. Yeah, of course. So are we guys ready? Okay, so I think we have ingredients here in the room, right? Absolutely. So we have 3 ingredients here in the room. We are going to treasure hunt those 3 ingredients. We are going to treasure hunt. Right, so that's you, ladies and gentlemen. Okay, so I need 3 participants for this. And I'm going to ask you guys 3 questions. If you know the answer, please raise your hand. And whoever wins it participates in the treasure hunt. Okay? Are we good? All right. So for my first question is, which is the oldest restaurant in Mumbai? Okay, your options are Pancham Puriwala, B. Britannia, C. Mahesh Lunch Homes. Can I see the hands?
Britannia. Okay. No, no, not yet. Pancham Puriwala. Oi! Girls, behave. Okay, I love to be buttered, love to be clubbed. Often on a heated pan, I'm rubbed with a tasty bhaji or cutting chai. Like a roti bread, you can eat me dry. Wow. That was easy. तो ढूंढिए
वी गोना कुक समथिंग फ्रॉम मुंबई. भाई मुंबई में है, मुंबई का खाना बनाएंगे. और क्या बनाएं? आलू है, Let's see. पाव भाजी बनाए, ये बड़ा पाव बनाए है. Vada pav, chef. चलो सर, आपने Vada मेन्यू बना pav, दिया तो it's हम खाना Bombay. बनाए. Alright, let's do this. Thank you. So, while I... हाँ, सबको खाने को मिलेगा, I promise. सबके लिए बनाऊंगा. है? Okay, so, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे. वड़ा पाव के अंदर भरेंगे चीज. Wow. Lots of cheese, Yummy. chutney and cheese. Let's set it up. What can I do, chef? So normally, when we are out, आप बातें करो यार. बातें करूं? हाँ. बस बाकी काम आपने ऐड नहीं देखा फिलिप्स शेफ का? वड़ा पाव सोच के बोलती बंद हो गई है. So actually, our Philips TVC, it has me making a balloon elephant Really? because everything else is being done by the With that. Philips air fryer. How So amazing. So when you're cooking with Philips, all you do is just talk and let Philips do the cooking. That means there's hope for me now. Absolutely. चलिए, पहले ना ये सबसे इंटरेस्टिंग काम होता है. हम लोग जब टीवी शो करते हैं ना, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग काम ये होता है, पहले ये जो प्लास्टिक रैप निकालना होता है. सॉरी, हाँ कर दूंगा सर, डोंट वरी. Should I remove it from this? या प्लीज. Is that cheese? Is that butter? नाइस. So are you those category जो पानी भी जला देते हैं? Pretty much. Yes, never thought I'll admit on national television, but kind of. Yeah. No, that's not true, chef. I make amazing omelets. There you go. पानी जला देते हैं लेकिन ऑमलेट बन Omelet, हाँ. जाता है. Not bad. Can I have some empty bowls here, please, for mixing? Bowls for mixing. Hello, ji. Cheese is here. Chef, I want to know how was your journey the first 2 years with the show? It I've was- seen you travel so much. Yeah. I've It seen was you great, whip up it was some good fun. amazing things. It was good fun, yeah. मतलब हिंदुस्तान में जो फ्राइड खाने का कल्चर है ना, it's outstanding. अब हमारे पास प्रेजर्वेशन का कोई मीडियम तो था नहीं, पहले फ्रीजर्स भी नहीं थे और टेम्परेचर इतना खराब हो जाता था बारिशों में, कोई भी चीज़ जल्दी खराब हो जाए. Right. So our only way to preserve food was to fry it, right? Yeah. So that's why in India you get so much fried food because that's the best way to keep food for a long time. People used to go for weddings and they used to bring back stuff for it used to take 10 days to travel. Yeah. And everything was fried because that was the only thing that would stay. So while on my journey in those 2 years, I realized that as Indians, we cannot do without our fried food. No. Now, what we need to figure out is how to live happily with the fried food that we are meant to live with. Try So- to make it healthier. Yeah, and that's where the Philips air fry came in. Now, the first thing and the most important thing is to turn it on. And try again. Thank you, G. Can we see if this is turning on from somewhere? ओके जी, वैसे अगर आप घर पे स्विच लगाएंगे तो ऑन हो जाएगा, आई प्रॉमिस. अभी यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा जुगाड़मेंट हो रखा है नीचे. ऑलराइट, टिल वी डू दैट, लेट्स मेक द फिलिंग. नाउ यहाँ पर बीइंग अ शेफ, सो एक्चुअली आई वर्कड इन दिस होटल फॉर 4 years. Wow. So I can just give them a call and say, hello, सामान रेडी कर दो. So काफ़ी सामान रेडी है, मतलब आपको घर पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. We have some potatoes. Boiled, right? Boiled Yeah, so potatoes. these are boiled Ready? potatoes. We'll mash them. एक आलू ऐसी चीज है, मतलब normally when we talk about potatoes, we just think some things we just assume that they're Indian. जैसे आलू, but unfortunately आलू is not Indian. We made it as we make it seem like we were
born into the potato land, but we weren't. Potatoes are actually Peruvian. Yeah. Traveled from Peru into Europe and then into India. अब यहाँ पे बीच में मैंने तड़का डाल दिया. फिर से करें try. So the तड़का that we put is ढेर सारी मिर्ची, ढेर सारा कड़ी पत्ता और ढेर सारा प्यार. प्यार मतलब नमक मिर्च एटसेट्रा एटसेट्रा. नहीं? It's already smelling so good. है ना? There's something about curry leaf and ginger. Absolutely. Little more. Now that it smells good. Now we had a neem होता है ना neem. So in Rajasthan I went to a few places and they use neem leaves instead of curry leaves for bitterness. Oh. And it tastes amazing. मतलब नीम सब्जी बना के उसके ऊपर हल्का सा लास्ट में 3-4 नीम के पत्ते डाल के छोड़ देते हैं. तो जो कड़ी पत्ते से कड़वाहट आती है ना वो नीम के पत्ते से आती है. आउटस्टैंडिंग. Must try. They do this. है मैं कहाँ की बातें कहाँ ले आता हूँ, but फिर भी it's very interesting. So there is this fish called मीठे नीम की मंगूर. Catfish होती है. Catfish को नीम के साथ पकाते हैं. Outstanding. Anyways, we back to our curry leaf. Now is the most difficult part. Oh. गोले बनाना. Okay. With cheese. With cheese. So we take the potato and stuff it. Actually, the old chaat ना अगर आलू की बात करें तो पुरानी टिक्की जब हिंदुस्तान में आलू नहीं था चाट उससे पहले थी, right? So chaat has existed even before potato came into India. So they used to make these kachalu tikkis. So because that was the only form of starch available, kachalu and ratalu and even till today, some places serve those kachalu tikkis. Wow. Outstanding. So अब आप पुरानी दिल्ली जाएंगे कचालू टिक्की जरूर खाइएगा, Next time you make that for us. है ना? That's what it is about food, right? The moment you talk about it, everybody's like Tempted. है ना? Yes. Mouth is watering. All right. So we have 2 giant vadas, एक आपका एक मेरा, एक और What बना about them? बना रहा हूँ. कोई ना वो वाला चल रहा है ना? हाँ? Lovely. अब नॉर्मली क्या होता है ना, लोग बोलते हैं यार एयर फ्रायर में पकोड़े कैसे बनेंगे, सारा बैटर जो है वो बह जाएगा, बिकॉज पकोड़ाज आर बैटर्ड, यू नो, एंड देन तेल में तो बैटर जो है पकड़ लेता है, पकोड़े कैसे बनेंगे? सो सिमिलरली ऑन अ वड़ा it is battered. So we found a trick. At Philips, what we do is we innovate. क्या है सर वो line? Innovation in you. So that's the advantage with being a brand for long. So we innovate. So what we Right. did was we took some batter and then we took some save. Oh. So पहले हम इसको बैटर में डालेंगे, Right. फिर हम इसको सेव में डालेंगे. Save is going to hold up the batter. Nothing is going to fall into the air fryer. So you'll have the batter as well and the crunch of the save as well. Perfect. Isn't that a cool idea? Super. That I came up with. Totally you. Can I put this in the back, please? Thank you. Okay, Ji, now this is the time when you get your hands dirty. And it's working. Yeah, let's see. On करें सर? कमाल हो गया. ये हाँ अभी कर देते हैं सर, अभी तो फोटो खींच लेगी ना उसकी. No, it's important. See, the most important thing to do while you're cooking is have fun. Yeah. If you can't do that, food will. See, if you don't smile when you're cooking, the food won't smile at you, and you'll be like, and then the people who eat it will definitely not smile. पूजा जी, कर दें इसको चालू कर देते ना. मेरे हाथ गंदे ना, निशान आ जाए. हाँ, बस 180 हो गया था. So the trick is to preheat the air fryer. That's what I always tell everybody. अगर preheat नहीं करेंगे तो stuff tends to get dry because it takes longer to cook. It dries out. So the trick is to preheat the air fryer. And now
the trick to not get your hands very dirty is use one hand for dipping and one hand for rolling. Okay. See, so many tricks. Too many tricks. Too many tricks, I tell you. Chef, tell me, what should be my first recipe that I should try with the air fryer? Something easy. The best thing that you could, what does your mom cook really well? I'm a Gujarati, हाँ, so maybe you can suggest me something. छोटी वाली कचौड़ी होती है ना? हाँ. So right when your mom has made them and she's going to put it into the kadhai, take it from her and dunk them into the air fryer. Superb. You'll score brownie. One is you'll So score I can brownie eat points. 2 extra this time. Yeah. Nice. I like that. Also, you know, so air fryer is like 1 kilo प्याज बचता था तो आ जाते थे अपनी knife लेके and he used to, you know, just peel the 5 kg and he said, इतनी देर से लगे हुए थे, देखो मैं आया 5 मिनट में काम हो गया. So you can say that because you put it last. Saying क्या करे 2 हुए मिनट थे, का 2 तो मिनट काम हो था. गया, 2 मिनट 2 का मिनट का काम था. इतनी देर से लगे हुए थे. So yeah, so that was that. अभी तक how is the, you think? Very interesting. You're Very impressed interesting, chef. हाँ, with क्योंकि this guy? ये हमेशा होता है बाहर इतने सारे sinful options होते हैं. There's some amazing yummy food that you know you have to really put your mind to and choose out of, and you know they can be more sinful than the other. And when you're craving or when you're outside anyway, you know we work really hard. You travel so much, you know this. बहुत जब भूख लगती है, then you cannot help it. You want to go straight at your favorite food. And that happens with me also. So now, when I get these cravings for vada pav, I know the healthier way to do it. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्शन को बोलना है मेरा एक बैगेज एक्स्ट्रा होगा. Oh, I just remembered something. So, you know, just like everybody else, pani puri मेरा actually favorite है. मुझे बहुत अच्छी लगती है pani puri. And it's always, you know, when I have to eat from outside, तो मुझे हमेशा ये, you know, ये लगता है कि oh no, I think it'll be too many calories. It's too fried. पूरी बहुत fried है. तो मैं क्या करूँ? देखिए Can आप हैरान होंगे सुन के, लेकिन इसके अंदर हमने पूरी और कचौड़ी भी बनाई हुई है. Really? And it kind of puffs up. Superb. For more you can log on to, क्या था मैडम अपनी वेबसाइट? For more you can log on to healthyrecipes.co.in. I have my 2 favorite foods sorted. Yeah. No, so this is a revelation in a lot of ways. You know, for me it was a revelation in the first time I used it. Yeah. But it is a revelation in a lot of ways. Nice. चलो जी, प्लेटिंग की तैयारी करते हैं. लाओ जी. मेरे बड़े दे दो, वो मेरे पाव दे दो थोड़े से. So another दूसरी चीज क्या है कि now normally we say it's an air fryer, but it bakes really well because there's a uniform flow of hot air around, and also the hot air kind of gets into a pressure. So अगर आपकी normally oven में brownie 18 मिनट में bake होती है, it's going to bake here in 11 minutes. Wow. So it's like a Time saver. pressure cooker baker. So it's a calorie saver, it's an oil saver, Yeah, and it's a time saver. absolutely. What better than that? Let's see how they look. Madam, देख लो आप. Now you're the chef, now you don't have. Let's do this. How do I open it? Just push. Yeah. See, I Wow. was not kidding. Yum. Good. नहीं मेरे को Can you smell it? Yes. They can smell it. आ It's रही है ना yum. smell? मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली खाना बना. हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम. बंद हो जाएगा वो. God is great. Hello जी. So we have the vadas back again. Can we have a knife to cut it? It will be too big to eat. एक knife दे बच्चे. Cut. So everybody is still. एक knife दे दे बच्चे. एक करके. Here we are. Wow. तो मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा था. Nice. हाँ जी. Of course.
pleasure, Ji. Okay, let's take this out. Super hot. Actually, I got carried away. थोड़े छोटे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं. Now the regular stuff. ये खोल दूं मैं? Please, thank you. चम्मच चाहिए. So ये तो अब इजी पार्ट है. मतलब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं. जैसे ही चम्मच आएगा वैसे हम शुरू हो जाएंगे. मतलब we've always had a vada pav and mini vada pav. Suddenly when it comes from the west as a slider, we're like, oh wow, there's a slider on the menu. नहीं? Totally. Oh, nice. Yeah, do that. It's gonna be. Do this part. This one's done. Nice. This is going to be very spicy. Yeah, Oh my god. we'll save that for you. Nice. Yes. Ooh. देखिए बॉम्बे में बगैर मिर्च के कोई वड़ा पाव होता है क्या? एक तो आधा काम तो ये अच्छी सारी प्लेट्स कर देती है ना. The plates make the food look Just so look good. more ना? delicious. Yeah. Nice. So appetizing. So yeah, मतलब the moral of the story here is everything that you thought was impossible to cook not fried is possible. And Brilliant. and that's a personal guarantee. I mean, you know, let's forget about where we're standing. Personal guarantee. आप ऐसी कोई भी चीज जो आप बोले बगैर तले नहीं बन सकती, मेरे पास आइए. Promise. Next time. Thank I'll you. hold you up on that, chef. Absolutely, absolutely. So cool. That looks so amazing. Are we going to do food tasting right away, or are you going to try it? बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, पता है. सब लोग देखेंगे और हम लोग तो शादी की तरह खाएंगे एकदम. वो built up है, chef. वो built up है. Everyone's going to wait for it. हाँ, पहले आप. Can we get a tissue or something? Thank you. क्या करते अगर आपने? Premium की promotion. I promise आपको भी मिलेगा. Now this is the wedding picture. Yeah. आप खा रहे हैं और lucky लोगों का one. कैमरा लगा हुआ है इसमें. हाँ ना? बिल्कुल zoom हो रहा है. The cheese is I don't know if you're jealous or if you're gonna laugh. Okay, I can see cheese oozing out. Oh my god, I can't wait to do this. Let's go. Woohoo! Oh my god. Amazing. सही में मतलब? सही में? Just cross checking. Come. And chef, I almost cannot tell the difference. है ना? बिल्कुल नहीं. ये लो. It's too young. I'm This gonna is for take your another सही bite. में. Oh. Yes, I get it. I'm giving you company. आ रहा है मैडम? अपना ही Definitely आ रहा है. Amazing. Okay, that's coming in my house for sure. Thank you, Prachi, for being such a lovely chef. He's a born chef. You've gotten getting into there. one. You've become one. Okay, on that note, I'd like to invite, we have a surprise for you. I'd like to invite a representative from Philips to kindly come and share the token of love and appreciation.
Bench 18. Prachi, really good to see you. Thank you. और सबसे, the very first thing, you look amazing in this outfit. Thank you. Tell us, पहली बार या कोई होता ना कुछ खाने याद रह जाते हैं नानी के, दादी के, मासी के, कुछ बताना चाहिए आप कितनी, और आप जैसे आपने कहा कि आप हमेशा फूडी रही हैं। मैं एक्चुअली गुजराती हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे लिए स्पेशलिटी तो ऊंधियू जो होता है वो है। उसके लिए शेफ़ को पता है ज़्यादा कि इंग्रेडिएंट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी नानी जो बनाती थी ऊंधियू, वो मेरा सबसे फेवरेट था और आज भी मैं वो मिस करती हूँ। एंड मेरी मम्मी के हाथ का आई थिंक एग करी मेरा फेवरेट है। सो दीज आर टू ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स एंड आई थिंक मेरे बचपन की जो यादें हैं वो इससे ज़रूर जुड़ी हुई है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई गेट नॉस्टैल्जिक देन आई क्रेव फॉर दिस फूड। ओके, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, कहीं टुंडे के कबाब हैं, कहीं नहारी जी। हैं, अलग अलग तरह की मुख्तलिफ तरह की पकवान है, बहुत डिलीशियस। कोई एक शहर जिसका खाना आपको बहुत पसंद है? एक्चुअली जी बिल्कुल, आई थिंक लखनऊ तो हम सबका फेवरेट है। जैसे ही लखनऊ का नाम आता है आई थिंक योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग फॉर बिरयानी एंड कबाब्स। एब्सोल्युटली, आई थिंक नोबडी बीट्स लखनऊ इन दैट। और दूसरा जो है वो गोवन फिश करी है। Oh my God, that's I think like a thorough favorite. I'm ready for that anytime. ओके शेफ, Actually, just want to add on to her. आपने ऊंधियो बोला, तो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी नानी जो है वो सूरत से पानी लाती हैं हर बार ऊंधियो के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि पानी भी सूरत का होना चाहिए असली सूरती ऊंधियो के लिए। तो ऊंधियो अगर आप ऊंधियो इज़ वन सच डिश दैट्स ब्रिलियंट, ग्रेट चॉइस। ओके, शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेजर हंट की हम बात करते हैं तो हम हमेशा इमेजिन तस्वीर में ये आता है कि भाई हीरे जेवरात कुछ अलग कुछ होगा। अब ये तो बिल्कुल अलग तरह का है। इस पूरे शो के बारे में बताइए। I think थर्ड सीजन, people are liking it. I think I really want to congratulate the team for their third season. I think it's brilliant and TGIF is I'm sure everybody's favorite show. Treasure Hunt तो मेरा बहुत favorite है. I love doing I love scouting for things and solving those puzzles. तो आज जब actually Treasure Hunt बोला तो it left me wondering कि क्या है, क्या कोई ये प्राइज़ होने वाला है, कुछ गिफ्ट होगा, because it's always stones, it's always diamonds. बट शेफ़ ने तो उन्हें कुछ अलग ही एक्टिविटी करवा दी। उन्हें एक्चुअली हमें सही जवाब देने थे फॉर दिस लिटिल क्विज विद फूड, और वहाँ से वो इंग्रेडिएंट्स ढूंढने थे, बिकॉज आज की जो स्पेशल डिश थी वड़ा पाव, उसमें जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स पोटैटो, पाव एंड द थर्ड, what was the third? Save. How can we miss that? So yeah, it was that was the treasure hunt. नहीं, अगर ट्रेजर की बात करें तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि खाना जो है वो आपको मेमोरीज़ के ट्रेजर देता है। जैसे हम बनारस में एक जगह गए, हमने एक जगह ढूंढी जहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो मुहर्रम के दिनों में बैठ के और नंगे पाँव चल के वहाँ आते थे और वहाँ बैठ के शहनाई बजाते थे, और उनका एक चिकन टिक्का हमने वहाँ पे खाया। तो दैट इज़ ट्रू ट्रेजर। वो जगहें जो हैं जो खानों के साथ जुड़ी हुई हैं और ऐसे लोगों की मेमोरीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कहीं किसी ने उस दुकान पे वो समोसा खाते हुए वो गाना लिखा जो उसकी ज़िंदगी का सबसे हिट गाना था, उससे बड़ा ट्रेजर कुछ नहीं हो सकता। सो वो जो ट्रेजर का जो पर्सपेक्टिव खाने के साथ जब मिलता है तो द होल सिनेरियो चेंजेस, और तब जो है और वो इस सीज़न की खूबी। ओके प्राची, जैसे बरार ने कहा है क्या कुछ इस तरह की यादें हैं जहाँ आप कुछ खा रही हैं और अचानक किसी का फ़ोन आता है, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रॉक ऑन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ऐसा कुछ यादें हैं? एक्चुअली है। मेरी जो पहली फिल्म है रॉक ऑन, जो मैंने मेरी पहली फिल्म की थी, मुझे याद है कि मैं तब झलक दिखला जा शो कर रही थी, विच इज़ द डांसिंग शो, एंड ब्रेक्स के बीच में मुझे तब क्रेविंग्स होती थी, एंड आई लव थाई फूड एट दैट टाइम। तो मैं अपना फेवरेट ग्रीन चिकन थाई करी खा रही थी, एंड आई रिमेंबर दैट्स व्हेन आई गॉट द कॉल टू गो मीट अभिषेक. And oh my God, I will never forget that. That's so true, like you said, food and memories together. Green Thai curry is stuck with you. Totally. Okay, Prachi, Rock on 2 trailer is out and people are loving it. Right. Especially your look. Yeah. What would you say about that? I guess I'm more than happy with the kind of response that people have about this film. मुझे पता है कि बहुत intrigue है, बहुत mystery है, and बहुत curiosity जुड़ी हुई है, because it's the sequel. And I just want to tell people that you have no idea what's in store. There's so many more amazing things that are yet to come. And yes, I'm loving my look. Okay, Azhar की please make me correct if I'm wrong somewhere. चाहे मैं अजहर की बात करूँ या
अभी आपकी आने वाली फिल्म की बात करें, आप जब भी ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते जी। हैं, अगर मे बी योर वर्क इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, बहुत थोड़ा सा होने के बावजूद भी, यू नो, व्हाटएवर यू आर देयर ऑन स्क्रीन, इन व्हिचएवर टाइम इट वाज अप्रिशिएटेड. थैंक यू. Rock on 2 में there'll be a comparison between you and Shraddha Kapoor. There'll be a comparison. How do you see this? यू नो द वे आई सी इट, मुझे लगता है कि पहली फिल्म में जो हमारे 4 अमेजिंग बॉयज़ थे कास्ट में, देयर वाज फरहान, देयर इज अर्जुन, पूरब, लूक. दिस टाइम अगेन वी हैव 3 ऑफ देम एंड देयर इज वन मोर एडिशन, शशांक. जब उनमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो लड़कियों में क्यों होना चाहिए? आई डोंट थिंक दैट विल एवर बी. मुझे लगता है कि एवरीबडी इज सो वेल सूटेड फॉर देयर पार्ट एंड आई थिंक किसी का नज़रिया उस तरह जाएगा ही नहीं. आई गेस दे विल जस्ट वॉच इट ऑन द होल एज अ कंप्लीट फिल्म. This is the second time you give me the same answer. You also give me the same answer at the trailer notes of Rock. And you still ask me the same question again. How many times are you going to ask me this again? Thank you so much. Thank you. That's the channel coming in.